क्यों अपने आप एंड हो जा रहा है. टॉकिंग अबाउट द liver function test. Liver performs 5 important functions like metabolic function, excretory function, protective function, detoxification, hematological functions and storage function. इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया. एंड कॉजेस ऑफ लिवर डैमेज है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वायरसेस की वजह से. टॉक्सिन्स कौन से टॉक्सिन्स? कार्बन टेट्राक्लोराइड, एफ्लाटॉक्सिन, मशरूम्स में भी होता है. एंड अल्कोहल, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है. अब लीवर फंक्शन को एसेस करने के लिए हम लीवर बहुत सारे फंक्शंस करता है तो हम उस बेसिस पे टेस्ट प्लान कर सकते हैं. जैसे एक्सक्रीटरी फंक्शन है तो उसके लिए बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड ब्रोमोसल्फेटिन ये करना पड़ेगा. एंड सीरम एंजाइम्स के लिए liver determination of transaminases, alkaline phosphatase, 5' nucleotidase, gamma glutamyl transpeptidase. तो ये सब सीरम एंजाइम्स के लिए टेस्ट करना है तो ये एंजाइम्स टेस्ट करना पड़ेगा. दैट इज transaminase, alkaline phosphatase, 5' nucleotidase, gamma glutamyl transpeptidase. Metabolic capacity, galactose tolerance, antipyrine clearance, synthetic function, prothrombin time, serum albumin time. ठीक है. एंड सिंथेटिक फंक्शन में प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सीरम एल्बुमिन. एंड डिटॉक्सिफिकेशन में ह्यूरिक एसिड टेस्ट, सिंथेसिस टेस्ट करना पड़ेगा. सो बात करते हैं बिलिरुबिन के बारे में. जब जैसे कि लिवर बहुत सारे फंक्शंस करते हैं तो उस बेसिस पे हम टेस्ट प्लान करेंगे. बिलिरुबिन पिगमेंट्स और बिलिरुबिन सेल्स एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ लिवर टेस्ट के लिए है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन इज़ अ बाइल पिगमेंट, राइट? इज़ अ बाइल पिगमेंट एंड इज़ द एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन. हीम डिग्रेडेशन पढ़ना पड़ेगा हमें बिलिरुबिन के लिए. इट इज़ कॉन्जुगेटेड इन द लीवर टू फॉर्म बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल. देखो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, जो बिलिरुबिन है एक बाइल पिगमेंट होता है वो एक्चुअली, एंड इज़ द एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट ऑफ लीवर ऑफ हीम डिग्रेडेशन. जब हीम डिग्रेड होता है तो एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट आता है बिलिरुबिन. अब बिलिरुबिन इज कॉन्जुगेटेड इन लीवर टू फॉर्म बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड. तो इसको ये टॉपिक को हम शॉर्ट में मैंने बताया. अगर इसको डिटेल में समझना है तो वी नीड टू नो द बिलिरुबिन डिग्रेडेशन. तो इन एलएक्यूज वी यूजुअली गेट बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म. सो साथ ही साथ इसको भी डिस्कस करते चलते हैं कि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है. हीम डिग्रेडेशन की वजह से होता है, राइट? हीम डिग्रेडेशन की वजह से होता है. तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन, हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे जब हम इसके बारे में बात करते हैं ना, डिग्रेडेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. इसमें इससे इस चैप्टर से हेमोग्लोबिन और पोरफायरिन के चैप्टर से हीम सिंथेसिस भी आता है एक. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे. तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे हम. ओके, तो हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं. जो हेमोग्लोबिन है वो सिंथेसाइज कैसे होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. एंड हेमोग्लोबिन डिग्रेड कैसे होता है, वो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में आता है. एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट. एंड पोरफायरियास भी पढ़ते हैं जब बायोसिंथेसिस ऑफ हीम होता है. तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑफ हीम सिंथेसिस ऑफ द पोरफायरियास. तो डिग्रेडेशन ऑफ हीम टू बाइल पिगमेंट्स वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा हीम होता है, हेमोग्लोबिन होता है, वो ब्रेक डाउन होता है हीम एंड ग्लोबिन में. ग्लोबिन में से जो अमीनो एसिड्स हैं दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन और डिग्रेडेड, कुछ भी हो सकता है अंदर में से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हीम का क्या होता है. तो जो हीम है वो हीम में आयरन होता है, राइट? तो हीम इज़ कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन. फर्स्ट वर्डिन में कन्वर्ट होता है, वर्डिन में. The heme is converted to biliverdin by the enzyme heme oxygenase. So it is converted into biliverdin. Heme is converted to biliverdin by heme oxygenase, and biliverdin is converted to bilirubin by biliverdin reductase enzyme. Biliverdin is converted into bilirubin by
तो हीम इज कन्वर्टेड टू biliverdin by heme oxygenase and biliverdin is converted to bilirubin by biliverdin reductase. So guys, daily we are doing तो मैं अपनी प्रोग्राम के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एवरी डे वी आर कंडक्टिंग द टेस्ट बेस्ड ऑन दी टॉपिक्स. लाइक आज हम like daily 10 LAQs from biochemistry, 10 from physiology and 10 from anatomy. इस तरह से LAQ वाइज कर रहे हैं हम. Today is the 4th day. So 10 LAQs हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हीमोग्लोबिन है वो ब्रेक डाउन हो रहा है हीम में और ग्लोबिन में. तो ग्लोबिन में भी रीयूटिलाइज्ड और डिग्रेडेड, ठीक है, उसके अमाइनो एसिड्स जो हैं. और हीम जो है बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा एंड बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में. बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होने के लिए हीम ऑक्सीजनेस एंजाइम चाहिए एंड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होने के लिए बिलीवर्डिन रिडक्टेस चाहिए. हीम का ऑक्सीजनेशन करोगे तो बिलीवर्डिन मिलेगा और बिलीवर्डिन का रिडक्टेस करोगे तो बिलीरुबिन. तो ऑक्सीजनेशन देन रिडक्शन. तो जब हीम बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है उसमें से आयरन एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है and the oxygen NADPH is H plus converted into NADP plus. and जब रिडक्शन होता है तो जो NADPH plus H plus है फिर वो NADP plus में कन्वर्ट होता है, ठीक है. तो ब्लड में आता है कौन, बिलीरुबिन ब्लड में आता है. बिलीरुबिन ब्लड में आने के बाद क्या होता है, बिलीरुबिन ब्लड में आता है एंड बिलीरुबिन ब्लड में आने के बाद बिलीरुबिन ब्लड में आता है. बिलीरुबिन ब्लड में आने के बाद बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर लीवर में जाता है. लीवर में जाने के बाद जो बिलीरुबिन है वो ग्लूकोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होता है एंड बनाता है बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड. बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बनाता है. जो बिलीरुबिन है बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज तो जो बिलीरुबिन है बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड में बनता है बाय द एंजाइम बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज. अब ये लिवर में बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बन गया बाय बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज से. यहाँ पे 2 UDP ग्लूकुरोनाइड मिलके UDP बनाता है एंड जो डाइग्लूकुरोनाइड है बिलीरुबिन को लग जाता है बाय बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज. अब जो इंटेस्टाइन और किडनी में बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड converted urobilinogen by the microbial enzymes in the intestine. bilirubin diglucuronide urobilinogen में कन्वर्ट करता है. फिर किडनी में क्या होता है, यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन और माइक्रोबियल एंजाइम से उसको स्टर्कोबिलिन और फीसिस में चला जाता है वो. तो इस तरह से डिग्रेडेशन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म देखें तो जो ब्लड में बिलीरुबिन है वो एल्ब्यूमिन से कंबाइन होता है, ओके. एंड उसके बाद लीवर में जाता है बिलीरुबिन और UDP से मिलता है 2 UDP ग्लूकुरोनाइड से एंड बनाता है बाय द एंजाइम UDP ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज. तो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बनता है. फिर वो हो गया कॉन्जुगेशन का स्टेप हो गया, ठीक है. फिर थर्ड स्टेप होता है सिक्रीशन. फर्स्ट स्टेप अपटेक जहाँ पे बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉन्जुगेशन बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन फॉर्म में लीवर में आता है. फिर बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बनता है कॉन्जुगेशन. विद थर्ड सिक्रीशन रहता है. सिक्रीशन में क्या होता है, जो बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है बाइल डक्ट से सिक्रीट हो जाता है. सो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन. सो डिग्रेडेशन ऑफ हीम टू बाइल पिगमेंट्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. तो एरिथ्रोसाइट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 days. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन. एरिथ्रोसाइट्स आर टेकन up and degraded by macrophages of the reticuloendothelial system. In the spleen and liver, the hemoglobin is cleaved to the protein part globin and non-protein part heme. About 6 grams of hemoglobin per day is broken down and resynthesized in an adult man. Fate of globin. The globin may be reutilized as such for the formation of hemoglobin or degraded to the individual amino acids. The latter undergo their own metabolism, including participation in fresh globin synthesis. Now, sources of heme. तो एक बार फिर से ये इंट्रोडक्शन में देखिए. एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन है 120 days. एरिथ्रोसाइट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 days. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड
they are removed from the circulation. Erythrocytes are taken up and degraded by macrophages of the reticuloendothelial system in the spleen and liver. The hemoglobin is cleaved to the protein part globin and non-protein heme. About 6 grams of hemoglobin per day is broken down and resynthesized in an adult 70 kg man. What is the fate of globin? The globin may be reutilized as such for the formation of hemoglobin or degraded to the individual amino acids. The latter undergo their own metabolism, including participation in fresh globin synthesis. Let's talk about sources of heme. It is estimated that about 80% of the heme that is subjected for degradation comes from erythrocytes and the rest 20% come from immature RBC, myoglobin and cytochromes. So sources of hemoglobin के बारे में बात करें तो fate of globin के बारे में बात कर लिए and heme के बारे में बात करते हैं. Now let's talk about the heme. So heme, it is estimated that about 80% of the heme that is subjected for degradation comes from the erythrocytes and the rest 20% comes from immature RBC, myoglobin and cytochromes. 80% comes from the heme. It is estimated about 80% of the heme that is subjected for degradation comes from erythrocytes and 20% comes from the immature RBC or the myoglobin or the cytochromes. Now let's talk about heme oxygenase. Heme oxygenase is a complex microsomal enzyme, namely heme oxygenase utilizes NADPH and oxygen and cleaves the methynyl bridges between the two pyrrole rings A and B to form biliverdin. Simultaneously, ferrous iron is oxidized to ferric form and released. The product of heme oxygenase reaction are biliverdin. See, sources of heme: 80% from the erythrocytes and 20% from the immature RBC, myoglobin and cytochromes. Heme oxygenase, a complex microsomal enzyme, namely heme oxygenase. It utilizes NADPH and oxygen and cleaves the. So there's an एंजाइम कॉल हीम ऑक्सीजन. फर्स्ट हीम का ऑक्सीजनेशन होता है, फिर बिलिवर्डिन बनता है, फिर बिलिवर्डिन रिएक्टर से बिलिरुबिन बनता है एंड देन बिलिरुबिन एल्बुमिन से मिलके ब्लड से लीवर में जाते हैं. लीवर में ग्लूकोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन होता है, फिर डाइग्लूकुरोनाइड बनता है, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, फिर वो माइक्रोबियल एंजाइम्स से यूरोबिलिनोजन में बनता है. दैट विल कम इनटू यूरिन एज यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिन फीसेस. सो ये ओवरऑल है. तो हीम ऑक्सीजनेस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स माइक्रोसोमल एंजाइम है. माइक्रोसोमल एंजाइम नेमली हीम ऑक्सीजनेस यूटिलाइजेस NADPH and oxygen and cleaves the methynyl bridges between the two pyrrole rings A and B to form biliverdin. Simultaneously, ferrous iron is oxidized into ferric form and released. The products of heme oxygenase reaction are biliverdin, a green pigment. Biliverdin is green color, and Fe+3 and carbon monoxide. Heme promotes the activity of this enzyme. Okay, so it breaks the bond. Okay, now let's talk about biliverdin. Biliverdin is excreted in birds and amphibia, while in mammals it is further degraded. Okay, so guys, we'll be continuing in the next live session. Thank you.
Okay, so now let's talk about the important aspect of bilirubin reductase के बारे में. So जो biliverdin है is excreted in birds and amphibia, लेकिन mammals में further degraded होता है. Birds and amphibia में biliverdin ही excrete हो जाता है, लेकिन mammals advanced. So biliverdin reductase enzyme के बारे में बात करें तो जो biliverdin methynyl bridges है बिटवीन द पायरोल रिंग्स सी एंड डी, ए एंड बी के बीच में हमने तोड़ के बिलीवर्डिन बनाया. अब सी एंड डी के बीच में उसको तोड़ा, मिथिनाइल ब्रिजेस आर रिड्यूस्ड टू मेथिलीन ग्रुप्स टू फॉर्म बिलीरुबिन. बिलीरुबिन इज अ येलो पिगमेंट. ओके, तो जो सी एंड डी के बीच में जो बॉन्ड है मेथिनाइल ब्रिजेस है उसको मेथिलीन ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस्ड टू मेथिलीन ग्रुप्स. एंड उसके बाद क्या हुआ, this reaction is catalyzed by an NADPH dependent soluble enzyme. So this reaction is catalyzed by an NADPH dependent soluble enzyme biliverdin reductase. Biliverdin एक soluble enzyme है, NADPH dependent. 1 gram of hemoglobin on degradation finally yields about 35 milligrams of bilirubin. So 1 gram of hemoglobin on degradation finally yields about 35 milligrams of bilirubin. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 35 मिलीग्राम्स क्या देता है, मिलीग्राम्स बिलीरुबिन देता है. बाकी का तो अपना ग्लोबिन पार्ट भी रहता है ना, तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन देता है. तो अप्रॉक्सीमेटली 250 to 350 mg ऑफ बिलीरुबिन इज डेली प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन अडल्ट्स. तो डेली देखें तो 6 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तो 1 ग्राम से हमें, तो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं हम कि 1 ग्राम से हमें अस्तगफिरुल्लाह, सो 1 ग्राम से हमें 35 कितना मिल रहा है, तो 1 ग्राम से हमें कितना मिल रहा है, 35 मिलीग्राम मिल रहा है, 35 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन. देन ना ये बताओ कि अगर हमारे पास 6 ग्राम्स है तो कितना मिलेगा. तो 35 इंटू 6 5 30, 6 3 18, 20 21, तो अप्रॉक्सीमेटली 250 to 350 milligram of bilirubin is daily produced in human adults. The term bile pigment is used to collectively represent bilirubin and its derivatives. Bile pigments में सिर्फ bilirubin नहीं आता, उसके derivatives भी आते हैं. अब हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ bilirubin to liver. अब बिलीरुबिन इज लिपोफिलिक, मतलब बिलीरुबिन को क्या पसंद है, लिपिड पसंद है, लिपोफिलिक, इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन. लेकिन जो हमारा ब्लड है वो तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन ये बिलीरुबिन लिपोफिलिक है, देयरफॉर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन. तो बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा इन अ बाउंड नॉन कोवेलेंटली फॉर्म टू एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन से बाउंड होता है. एल्ब्यूमिन के पास 2 बाइंडिंग साइट्स होते हैं फॉर बिलीरुबिन, हाई एफिनिटी साइट ना लो एफिनिटी साइट. जो हाई एफिनिटी साइट है ना और एक लो एफिनिटी साइट है, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन कैन बाइंड टाइटली टू एल्ब्यूमिन हाई एफिनिटी साइट पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा. 25 milligram of bilirubin can bind to the high affinity site tightly to the albumin. The rest of the bilirubin binds loosely at the low affinity site, which can be easily detached from albumin to enter the tissues. So certain drugs and antibiotics, example sulfonamides, salicylates, can displace bilirubin from albumin. So due to this, bilirubin can enter the central nervous system and cause damage to neurons. That's why sulfonamides and salicylates are not good antibiotics. Sulfonamides, because what they do, they displace the bilirubin from albumin. Sulfonamides and salicylates. Okay, so as the albumin bilirubin complex enters the liver, bilirubin dissociates and is taken up by the sinusoidal surface. So as the albumin bilirubin complex enters the liver, bilirubin dissociates and is taken up by the sinusoidal surface of hepatocytes by carrier mediated active transport. So here the bilirubin enters the hepatocytes by carrier mediated active transport. The transport system has a very high capacity and therefore is not a limitation for further metabolism of bilirubin. Inside the hepatocytes, bilirubin binds to a specific intracellular protein, namely ligandin. Binds to specific intracellular protein ligandin. Now conjugation of bilirubin. In the liver, bilirubin is conjugated with 2 molecules of glucuronate supplied by UDP glucuronate
This reaction, catalyzed by bilirubin glucuronide transferase of smooth endoplasmic reticulum, results in the formation of a water-soluble bilirubin diglucuronide. When bilirubin is in excess, bilirubin monoglucuronides also accumulate in the body. The enzyme bilirubin glucuronide transferase can be induced by a large number of drugs. Example, phenobarbital. Now let's talk about excretion of bilirubin into bile. Conjugated bilirubin is excreted into bile canaliculi. So conjugated bilirubin is excreted into bile canaliculi against a concentration gradient which enters the bile. So conjugated bilirubin is excreted into the bile canaliculi against a concentration gradient which then enters in the bile. The transport of bilirubin diglucuronide is an active, energy dependent and rate limiting process. Transport of bilirubin diglucuronide is an active, energy dependent and rate limiting process. This step is easily susceptible to any impairment in liver function. That is what excretion. The transport of bilirubin diglucuronide, active, energy dependent, means active only, and rate limiting process. This step is easily susceptible to any impairment in liver function. Normally there is good coordination between the bilirubin conjugation and its excretion into bile. Thus almost all the bilirubin greater than 98% that enters bile is in the conjugated form. Now fate of bilirubin. Bilirubin glucuronides are hydrolyzed, deconjugated in the intestine by specific bacterial enzyme named beta glucuronidases to liberate bilirubin. Now this latter is then converted into urobilinogen colorless compound, small part of which may be reabsorbed into the circulation. Urobilinogen can be converted to urobilin and yellow color compound in the kidney and excreted. The characteristic yellow color of urine is due to urobilin. A major part of urobilinogen is converted by bacteria to stercobilin, which is excreted along with feces. The characteristic brown color of feces is due to stercobilin. A major part of urobilinogen is converted by bacteria to stercobilin. Stercobilin में convert होता है urobilinogen. It is excreted along with feces. That's why the feces are brown in color. Okay, now let's talk about the characteristic yellow color of urine is due to urobilin, which is derived from the urobilinogen. The latter is then converted to urobilinogen colorless compound. Urobilinogen colorless, a small part of which may be reabsorbed into circulation. Urobilinogen can be converted to urobilin. Okay. If you want to know about jaundice and classification of jaundice, you can know. We have talked about the bilirubin, bile pigments and all that, right? So the thalassemia and all that are the important questions. Hemoglobin derivatives, sickle cell anemia and hemoglobin porphyrins, functions of hemoglobin, structure of hemoglobin. These are the important things, right? We were talking about the bile metabolism, right? So in bile metabolism, normal bilirubin metabolism we have discussed in detail, very detailed. Okay, what is probable diagnosis? How do you relate the history and laboratory findings to confirm your diagnosis? So the person was having chills and rigors for 2 days duration. Name the test performed to identify presence of bile pigments in the urine. So coming back to liver function test. So we have discussed everything. So first we have discussed about introduction. In erythrocytes lifespan is 120 days, and after 120 days erythrocytes are taken up and degraded by the macrophages of the reticuloendothelial system of the spleen and the liver. Talking about the fate of globin. So hemoglobin is break down into globin, a protein part, and the non-protein part, heme. About daily 6 grams of hemoglobin per day is broken down in a healthy adult man. In fate of globin, if you'll see, the globin is reutilized or maybe degraded into individual amino acids, and then it can be
used in their own metabolism or maybe in the new globin molecule synthesis. Talking about sources of heme, 80% from the erythrocytes and the rest 20% maybe from the immature erythrocyte cytochromes and the myoglobin. Heme oxygenase. So this is a complex macrosomal enzyme, namely heme oxygenase. It utilizes NADPH and oxygen and cleaves the methanol bridges between these two pyrrole rings. So heme oxygenase is a microsomal enzyme. It utilizes NADPH and oxygen and it cleaves methanol bridges between the two pyrrole rings A and B to form biliverdin. And simultaneously, the ferrous ion is oxidized to ferric ion and is released. Okay, the products of a heme oxygenase reaction are biliverdin, a green color pigment, and Fe+3 and carbon monoxide. Heme promotes the activity of the enzyme. So biliverdin is excreted in birds and amphibia, whereas in mammals it is further degraded. The biliverdin reductase is a methanol. It cleaves the methanol bridges between the pyrrole rings C and D, are reduced to methylene groups to form bilirubin, yellow color pigment. Biliverdin is a green color pigment. Bilirubin is a yellow color. This reaction is catalyzed by an NADPH dependent soluble enzyme, biliverdin reductase. So biliverdin reductase requires NADPH enzyme. NADPH. Okay, it's a soluble enzyme, biliverdin reductase. So 1 gram of hemoglobin is degraded into 35 grams of milligrams of bilirubin. Okay, so approximately daily 250 to 350 milligrams of bilirubin is produced in a healthy human adult. Okay, so the bilirubin along with its derivatives are collectively known as bile pigments. Transport of bilirubin to liver. Bilirubin is lipophilic, therefore insoluble in the aqueous solution, thus blood. So bilirubin is transported in the plasma and bound non-covalently bound to albumin. So albumin has two binding sites. One is a high affinity and another is low affinity. High affinity site, bilirubin binds tightly with it, and approximately 25 milligrams of bilirubin binds with the albumin in 100 ml of plasma. The rest of the bilirubin binds loosely, which can be easily detached from the albumin to enter the tissues. Certain drugs like sulfonamides and salicylates, they can split bilirubin from albumin. Okay, due to this, bilirubin can enter the central nervous system and cause damage to neurons. As the albumin bilirubin complex enters the liver, bilirubin dissociates and is taken up by the sinusoidal surface of the hepatocytes by a carrier mediated active transport. Albumin bilirubin complex enters the liver and bilirubin dissociates. So bilirubin has a very high capacity and therefore is not a limitation for the metabolism of bilirubin. Bilirubin binds to a specific intracellular protein, ligandin. In the liver, bilirubin is conjugated with two molecules of glucuronate supplied by UDP glucuronate. So this reaction is catalyzed by bilirubin glucuronyl transferase. So bilirubin glucuronyl transferase, smooth muscle endoplasmic reticulum, results in the formation of a water-soluble bilirubin diglucuronide. Also accumulates in the body. The enzyme bilirubin diglucuronyl transferase can be induced by a number of drugs. Example, phenobarbital. So after bilirubin glucuronyl is formed, it is excreted into bile by active energy dependent and rate limiting process. This step is susceptible to any impairment in liver function. So the conjugated bilirubin excreted into bile canaliculi against a concentration gradient which then enters the bile. So this then after entering almost conjugated bilirubin enters into the bile, and there bile glucuronides are hydrolyzed, deconjugated in the intestine by specific bacterial enzyme, that is beta glucuronidases, and they liberate the bilirubin.
then it is converted into urobilinogen and a small part of it is reabsorbed into the circulation. ओके सो ये हमारा हुआ पूरा बिलीरुबिन के बारे में. तो व्हेन यू गो फॉर वाइवा सो सम लेक्चरर्स विल आस्क यू अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी बिलीरुबिन and they'll ask what is the difference in them. So at that time you will be shocked, what is this hell. Okay, so I would like to discuss about it. ठीक है. हमने बिलीरुबिन के बारे में देखा कि वो कैसे पूरी कहानी समझ गए, है ना. तो जो बिलीरुबिन है, पहले जो हीम है, हीमोग्लोबिन है, वो हीम और ग्लोबिन में कन्वर्ट होगा. फिर जो हीम वाला पार्ट, ग्लोबिन वाला पार्ट है, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा या ग्लोबिन बनाएगा. जो हीम वाला पार्ट है वो हीम ऑक्सीडेज के मदद से बिलीवर्डिन बनेगा. फिर बिलीवर्डिन रिडक्टेज से बिलीरुबिन बन जाएगा. एंड देन जो बिलीरुबिन है वो लिपोफिलिक है, तो वो ब्लड में एल्ब्यूमिन से कंबाइन होगा. एल्ब्यूमिन के दो साइड से, हाई एफिनिटी साइड एंड लो एफिनिटी साइड. सो उसके बाद पूरा होगा, है ना. बिलीवर्डिन बिलीरुबिन बनेगा एंड ऑल दैट. उसके बाद जो वैसे सब हुआ, है ना. जो so we were talking about it, right? उसके बाद हमने देखा कि वो कॉन्जुगेटेड लिवर में पहुंचने के बाद एक्टिवली जाएगा एंड देन फिर कॉन्जुगेशन होगा यूडीपी ग्लूकुरोनाइड से, बिलीरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बनेगा. एंड देन उसके बाद बाइल कैलिकुलाइज से फिर बाइल में आएगा. एंड देन फिर इंटेस्टाइन्स में जाके जो इंटेस्टाइन्स में जो एंजाइम था दैट इज़ बीटा ग्लूकुरोनाइडेनेस ग्लूकोरोनिडेसेस, बीटा ग्लूकोरोनिडेसेस, वो क्या करेगा, उसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करता है. फिर यूरोबिलिन इन यूरिन एंड दी फीसस में स्टॉकोबिलिन के फॉर्म में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर ऑफ द feces and yellow color of the straw color of the urine. Let's talk about the primary and secondary. Okay, normal values also. तो टोटल बिलीरुबिन के नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है पहले देख लेते हैं. 0.5 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. तो टोटल बिलीरुबिन कितना होना चाहिए प्लाज्मा में? 0.5 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि बाकी का पूरा क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है. तो 0.5 to 1 चाहिए. तो अगर किसी पेशेंट के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर 4.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, मतलब ही सफरिंग फ्रॉम liver disease. Okay, because of that liver is not able to excrete the bilirubin. So normal total bilirubin in plasma is 0.5 to 1 milligram per deciliter. When it exceeds 1 milligram, then condition is called hyperbilirubinemia. When it is 1.2 to 2, then it is called latent jaundice. When it exceeds 2 milligrams, then it is called jaundice has occurred. So indirect bilirubin level is calculated as the total bilirubin minus direct bilirubin. So direct bilirubin, normal, indirect, conjugated bilirubin is 0.2 to 0.7 milligram per deciliter. That is the indirect bilirubin. Direct bilirubin is less than 0.3. Less than 0.3 is the direct bilirubin. तो टोटल बिलीरुबिन 0.5 से 1 के आगे अगर हो गया तो हाइपरबिलीरुबिनेमिया. 2 तक है तो लेटेंट जॉन्डिस, और 2 से ज़्यादा हो गया इसका मतलब जॉन्डिस हैज़ अकर्ड. तो 1 तक नॉर्मल माना जाता है टोटल बिलीरुबिन के वैल्यूज़. सो अगर आप चेक करते हैं सम लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट्स द न्यूरो फाइन. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द pigments, bile pigments and all that, functions of bile, excretion and all that. Primary bile acids and secondary bile acids, ये सब देखते हैं. So
जो सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल, दिस इज आई एम रिलेटिंग टू फिजियोलॉजी. ओके, फिजियोलॉजी में होता है लीवर. लीवर का नर्व सप्लाई क्या है बोले तो इट रिसीव सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम सीलियाक प्लेक्सस एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक्स ऑफ वैगस. तो पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक्स ऑफ वैगस एंड सिंपैथेटिक फ्रॉम सीलियाक ट्रंक. एनाटॉमी में काम आएगा. सो ऑल दीज नर्व फाइबर्स रीच द हेपेटिक टिश्यूज बाय पासिंग थ्रू हेपेटिक नर्व प्लेक्सस along hepatic artery and hepatic portal vein. So properties and compositions of bile के बारे में बात करें तो bile is a golden yellow or greenish fluid. I shall be discussing this in the next video. So thank you so much.